So today we will talk about center of mass. Do you have any idea? Center of mass. Center of mass सुनते ही क्या दिमाग में आता है? बताओ भाई. सुना है ये वर्ड पहले? हाँ बोलो. मैम सुना है लेकिन पता नहीं, याद नहीं आ रहा. याद नहीं आ रहा. चलो और कोई? सुना तो है मैम. Anybody else? Do you have any idea of center of mass? No, ma'am. Okay. So, okay. Tell me one thing. Have you seen any football player or any volleyball player to roll the ball on his finger? Yes, देखा? ma'am. चलो फुटबॉल आशीष के लिए, सर को देखा है. फुटबॉल के लिए तो हम ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल है ना? फुटबॉल तो स्फेरिकल है, तो हर तरह से वो एक ही जैसा दिखेगा, चाहे उसको किसी भी पॉइंट से पकड़ लो. बट वॉलीबॉल थोड़ी सी ऑब्लेट शेप की होती है, राइट? वो वॉलीबॉल इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, राइट? Yes, ma'am. सो जो प्लेयर है वो उस वॉलीबॉल को जब रोल करते हुए उंगली पे एडजस्ट करता है, तो क्या वो हर पॉइंट पे एडजस्ट कर सकता है या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होगा? एक या दो कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा? हम कोई पर्टिकुलर Particular पॉइंट पे ही point एडजस्ट पे. करता होगा. यस. अच्छा, एक चीज बहुत लोगों ने की भी होगी, शायद अभी हम कर नहीं पाएंगे, इसकी उम्मीद मत करना, कि बुक को, किसी बुक को या पतली नोटबुक को उंगली पर एडजस्ट कर लेते हैं घुमाते हुए. देखा होगा? देखा है? यस मैम. Have you Yes, seen ma'am. this? किया भी है. हाँ किया भी. वेरी गुड. किसने किया? मैम प्रिंस की तरफ से देखा था. मैम प्रिंस को एक बार करते हुए. हाँ. सो टेल मी कि वो काम बुक के साथ ये काम हम हर पॉइंट पे कर सकते हैं? आई मीन आई कैन एडजस्ट ऑन एवरी पॉइंट लाइक दिस, और आई हैव टू पुट माय फिंगर इन द सेंटर. मैम Center सेंटर ही पे पे. रखते हैं. Particular point. सेंटर पे. हम सेंटर. राइट. मैम क्योंकि दोनों तरफ वेट Equal इक्वल रहेगा होना ना. चाहिए ना. यस यस. Balance बैलेंस करेगा. होगा. वेरी गुड. वर्टिकली में भी नहीं होगा. Yes. So generally we can say that, normally we can say that the center of mass is that point where all the mass of the body is concentrated, right? Center of mass is that point where all the mass of that body is concentrated. Okay. And when we want to analyze the mechanism, the dynamics of center of mass, we can say that center of mass, the certain point whose motion define motion of the whole system. Center of mass is that point of the particle whose motion decide the motion of the whole system. If we have a system of many particles, then there is no need to define the motion of every particle. What we will do, we will find out the motion of the center of mass, okay? And that motion define the motion of the whole system. Is this clear? Is this clear? Yes ma'am. First of all, center, Yes, we can say that center of mass is that point where all the mass of the body is concentrated, right? And we know the example. Is there be examples diye? Okay. We know the examples. And center of mass is a certain point whose motion defines motion of the whole system. Okay. Now, Yes. let's try to understand center of mass of two particle system. Center of mass of two particle system. Like we have three coordinate x, y, z. Okay. And two masses are there. Particle A and particle B. Mass m1 and mass m2. Okay. This is your origin O. Origin. Okay. You know that origin, that means here is the value is 0 and whatever the units are. So it will increase here, x axis, in y axis and in z axis. R1 and R2 are the position vector for
particle A and for particle B with respect to the origin. Okay. M1 is the mass of the particle, M2 is the mass of the particle B. Now what we will do, we will take a center of mass. Generally, if this is a two particle system, then the center of mass will be between that particles, same distance from every particle, and this RCM, R and suffix CM, this RCM shows the position vector of center of mass. So M1 plus M2 at center of mass. I told you the whole mass of the system is concentrated. In this system we have two particles, so the total mass is M1 plus M2. So M1 plus M2 into RCM equals to M1 R1 vector plus M2 R2 vector. So we can say that the product of total mass of the particle, total mass of the system with the position vector of the center of mass is equal to the product of the masses of the particles with their position vector. Sum of the product of the masses of the particle with their position vector. And here we can find out the RCM, that is position vector of center of mass. Okay, M1 plus R1 vector plus M2 plus R2 vector upon M1 plus M2. Is this point is clear? Two particle system is a very easy example to start this. That's why I'm starting from this. So is this clear? Here we have two particles, A and B, and if I'm trying to find out the center of mass, I don't know exactly where it is. I'm trying to find out the center of mass. As we know that all the mass is concentrated on that point, so RCM multiplied by M1 plus M2 equals to M1 R1 plus M2 R2. And here we can find out the RCM. Is this clear? Is this clear to everyone? Is there any problem? Everyone answer. RCM is the position vector with respect to center of mass. Okay, if you remember when we are discussing the chapter vector, then I told you that if this is a two coordinate system, okay, and here is a particle A. So I want to define the distance. So this particle is at this position and this is at the R1 distance from with respect to origin. So R1 represent the position vector of A with respect to with respect to origin. Same here, R1 represent the position vector with respect to O. R2 represent the position vector of B with respect to O. RCM represent the position vector of center of mass with respect to O. जहां भी होगा वो center of mass, तो ये position vector को define कर. और अगर हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वो, तो हमें पता चल जाएगा कि कहां पर सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड है. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay. So from this formula, let's see the condition. If the mass of both particle are same, let's see क्या होगा. Condition 1. Okay, from this general formula I'm trying to see the different condition if M1 equals to M2 equals to M. Okay, if the both masses of the particles are same, then RCM equals to M R1 vector plus M R2 vector upon M1 M plus M, because M1 equals to M2 equals to M. So here I can take M common on here upon 2M. So M से M cancel and 1 by 2 R1 vector plus R2 vector. Now you can see this is a mean point, right? This is mean, formula of average, sum of the quantity upon divided by the number of the quantity. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Yes.
And generally, Yes, ma'am. generally just try to feel it. Just try to feel it. Generally, if we have two particles, so like here we have two particles, then center of mass will be at the between of them, same distance from the each particle, right? And this formula shows the same thing, right? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. And one example we can take like balance. Have you seen the physical balance? Have you seen the physical balance? कबाड़ी अबाड़ी के पास देखा है ना तराजू? हाँ यार वो Yes, ma'am. मैम हाँ, सब्जी भाई, वाला ये सुन देखें सब्जी वाले के सब्जी पास वाला। पास भी रहता है, सब्जी आपका वाला। कम ही रहता है, मतलब आप फिजिकल बैलेंस तो कम ही यूज करते हैं और उससे बहुत ज्यादा चीटिंग हो जाती है, नीचे लोहा चिपका देते हैं। खैर, कभी अगर उस फिजिकल बैलेंस को देखा हो तो देखा होगा कि पहली बात तो वो जो उसकी सुई रहती है जिससे हम मेजर करते हैं कि किस तरफ ज्यादा हो रहा है किस तरफ कम हो रहा है, वो बैलेंस में वो कहाँ रहती है? उस रॉड के मिड पॉइंट में रहती है। वैसे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, बट हम कंसीडर अगर कर लें कि दो ही पार्टिकल हैं जो कॉर्नर पे लटके हुए हैं, एक ये वाला तराजू, एक ये वाला तराजू, और ये तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों का वेट, तराजू का दोनों का वेट सेम ही होगा, तभी स्टार्टिंग में वो जो तराजू है हमारा वो बैलेंस हो पाएगा। उसके बाद ही हम एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ जो भी सामान रखता है और वो मेजर करते हैं, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Now you can relate by this formula. If the mass of the both particles are same, then the position of the center of mass will be at the mean position of the position vectors of two particles. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Okay. Now let's see the other condition. Let's see the other condition. If the position of the center of mass of two particle system is at origin, in case the center of mass is the position of center of mass is at origin, so that means RCM equals to 0. Second condition, if the position vector of center of mass is at origin. Okay, then what happened? RCM equals to 0. अगर ये सेंटर ऑफ मास उठ के यहाँ आ जाएगा तो ये जो RCM की डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी. Yes. Now put this value here. M1 plus M2, RCM की वैल्यू 0 हो रही है. M1 R1 vector, M2 R2 vector. Right? So M1 R1 vector plus M2 R2 vector equals to 0. Okay? Yes, Is ma'am. this clear? Yes, ma'am. So in this यस condition, मैम। sum of the product of mass and the position vector is also called moment of mass. Okay, so in this case the sum of moment of masses of two particles is equals to 0. Okay, two things I have told you, that product of mass and product of distance with respect to the origin, which is called position vector, this is called moment of mass. And in this condition where position vector is at origin, the sum of moment of mass of two particles is equals to 0. Is this clear? If R1 equals Yes, to ma'am. R2, just put it here. If R1 equals to R2 and this become 2R and 2 से 2 cancel हो जाएगा, center of mass कहाँ होगा? R पर ही होगा. Okay, and this R distance from the first particle and from the second particle, तो वो फिर बीच में ही आ जाएगा. जो R distance है वो first particle से भी R distance होनी चाहिए. अगर हम R1 equals to R2 कर दें यहाँ पर, तो यहाँ 2R हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास R ही.
तो अब ये डिस्टेंस ए पार्टिकल से भी आर डिस्टेंस और बी पार्टिकल से भी आर डिस्टेंस, तो फिर वो सेंटर में ही आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, if we have many particles, like n particles, this is all about the two particle system. Okay. If we have any body where we have many particles, like 1, 2, 3, 4, 5, n, 1, 2, 3, 4, and n. So the position vector will be r1 vector. For particle 2, it will be r2 vector, right? For particle n, it will be r1 vector. And we have here particle from 1, 2, 3, and n, whatever will be the digit. Now we have to find out the center of mass of this system. So here m1 r1, m2 r2, dash dash dash, mn rm upon m1 plus m2 dash dash dash, mn. Is this clear? Is this formula is clear? Yes, जनरल ma'am. फॉर्मूला जो दो पार्टिकल सिस्टम का निकाला था वो यही तो निकालता है, RCM equals to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, and here the number of particle is n, so m1 r1 vector plus m2 r2 vector dash 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 mn rn vector upon m1 plus m2 plus mn. Okay, is this clear? So now we will just write Yes, ma'am. in this notation RCM. Yeah, summation of, because of n particle, I can use this sign. This sign use the summation of the n number or many numbers, right? Maths में पढ़ा होगा. Yes, ma'am. पढ़ा है. Yes, ma'am. Total mass. पढ़ा है मैम मैथ में. Maths में पढ़ा हुआ है. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नोटेशन यूज करेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि इतना लंबा फॉर्मूला में नहीं लिखना पड़ेगा. लाइक एम आई आर आई वेक्टर, सो दैट मीन्स आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक, right? 1 to n. Here I am taking particle Yes, from 1 yes, to ma'am. 3, 4, 5, 6, n. Okay, so that means I am just writing like this. This is m I. You can take here I j k जो भी वेरिएबल चाहिए, और उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है. So m I upon r I into r I, and the value of R I. is from 1 to n. और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, m I, and the value of I is from 1 to n. Is this clear? अच्छा, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, this is Yes, Yes, ma'am. ma'am. represent the total mass of the system. Summation of I equals to 1 to n mi. This represent the total mass of the system. So I can write like this: I equals to 1 n mi ri upon capital M. लिख सकते हैं ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब से जहां भी ऐसा आएगा, जहां मैनी पार्टिकल्स की बात होगी, उसे हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे. लाइक 15 पार्टिकल्स भी आ गए या 10 पार्टिकल्स भी आ गए, तो 10 बार लिखने से अच्छा या 15 बार उसे डिफाइन करने से अच्छा हम इसको इसी नोटेशन में डिफाइन करेंगे. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now Yes, ma'am. let's see. RCM equals to, I can write like this, 1m, and summation of I equals to n mi ri. Now let's see one condition. If masses of all the particles are same, that means I am saying m1 equals to m2 equals to dash 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 equals to mn equals to m. सारे masses same हो गए. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 upon capital M I equals to 1 n, and this will be m because all the masses are same.
सो आर आई वेक्टर, वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ हमेशा लगाना है, अगर मेरे से कहीं छूट भी जाए तो लगा लीजिएगा. सो आई कैन टेक m outside the notation and write like this. Okay, now tell me one thing. M, small m is the mass of one particle, right? Capital M is the total mass of the system. So can I write capital M equals to n, number of particle multiplied by mass of one particle? लिख सकते हैं. फिर तो सुनो मेरी बात को. मास m जो स्मॉल m है वो एक पार्टिकल का मास है, ठीक है, और जो कैपिटल m है वो टोटल सिस्टम का मास है. तो क्या हम इसको कैपिटल m को n नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल लिख सकते हैं? ऐसे ही तो निकालोगे कैपिटल m. अगर सारे पार्टिकल का मास इक्वल हो और हमें टोटल मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल से मास का मल्टीप्लाई करा देंगे, तभी तो निकलेगा. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So here I can cancel this and I can write the formula like this: 1 upon n summation of I equals to n m, and this is Ri vector Rc. So in this condition we can do like this. m को जबरदस्ती m को हमें कैलकुलेशन में डालने की जरूरत नहीं है. अगर सारे मास का पार्टिकल सेम है तो m को हटाई तो सीधे यहाँ पे क्या करेंगे? सम ऑफ द पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल, आरसीएम आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ टेल मी Yes, इफ ma'am. आई विल टेक द सेकंड कंडीशन. इफ आरसीएम इज एट द ओरिजिन, तब क्या होगा बताओ भाई? इफ आरसीएम इज एट द ओरिजिन, क्या होगा? सेकंड कंडीशन, if RCM is at the origin, that means the value of RCM is 0. Then what will we have? What is the scene? Put value 0 here. 0 equals to 1 upon m, and here mi equals to 1. अगर हम ये कंडीशन ना भी लेके जनरल फॉर्मूला भी ले लें कि मासेस अलग अलग होंगे, तब भी देख लो क्या होगा. पहले यही वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, that RCM equals to 1 upon m summation of I equals to 1 n mi and Ri vector. So if RCM equals to 0, that means 0 equals to summation of I equals to 1 n mi Ri vector. Okay, so this factor will come here and become 0. So I can say that in this condition the sum of moment of masses of all particle will equal to 0. I equals to 1 to n. Is this clear? Is this condition is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in this way, from the coordinate system, we can find out the position vector of RCM, position vector of center of mass, and we can find out the exact position of center of mass of any system, any body. Okay? Is this clear? Yes, ma'am. Now, so Yes, ma'am. talking about Cartesian coordinate system na. So if I want to write in x direction, ठीक है, अगर हमें x direction में ही लिखना है RCM, so I can write 1 upon m summation of I equals to 1 n mi xi, right? इसको ऐसे लिख सकते हैं. That means m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 dash dash mn xn upon m1 plus m2 plus m3. ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अगर हम